7 of the same family were killed, while 2 others rescued after 2 houses were washed away after cloudburst-induced flash flood was reported in Solan district. The rescued family members were taken to Sayari Hospital for treatment. In a separate incident reported in Shimla, at least 30 are reported missing following a cloudburst. Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu, who condoled the deaths, directed authorities to ensure all possible assistance and support. मैंने अभी सभी डिप्टी कमिश्नरों से बात की और पता चला कि बारिश बहुत तेज हो रही है, और तो हमने आज निर्णय किया है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाता है। एक दिन के लिए, आज के दिन के लिए बंद किया जाता है। In view of the incessant rains, the Himachal Pradesh government on Sunday informed that the Himachal Pradesh University has cancelled all the ongoing examinations of postgraduate classes scheduled on August 14th. Schools and colleges will remain closed on Monday. A total of 621 roads, including a maximum of 236 in Mandi, 59 in Shimla and 40 in Bilaspur district, are currently closed for vehicular traffic, according to the State Emergency Operation Center. अभी हमें जो है सुबह 2:30 बजे से 3 बजे से ही हमें जो है इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी कि मल्टीपल पॉइंट्स पे जो है लैंडस्लाइड की रिपोर्टिंग है और तेज़ बारिश है। और जो हमारे मेजर 3 एक्सिस हैं, रूट्स हैं मंडी के। एक हो गया हमारा मंडी टू पंडो का जो रूट है, यहाँ पर जो है मल्टीपल लोकेशंस पे हमें फ्लैश फ्लड की जो है इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा हमारा जो है ये जोगिंद्रनगर मतलब मंडी पठानकोट है, यहाँ पर उरला के पास जो है मलबे आने की सूचना है, तो ये भी रोड अभी बंद है। दूसरा टूवर्ड सुंदरनगर हराबाग के अंदर जो है लैंडस्लाइड आया है, तो NH भी हमारा थोड़ी जो है वहाँ पर अवरुद्ध है, पर वहाँ पर काम चला हुआ है। तीसरा जो है जो एक लिंक रोड है हमारा बजौरा के लिए वाया कमांद जो है, वहाँ पर भी हमें सूचना है मल्टीपल लैंडस्लाइड्स की, और कल रात से ही वहाँ पे ट्रैफिक जो है स्टैंडर्ड है। वो भी हम टूवर्ड्स मंडी और मतलब फ्रॉम मंडी और कुल्लू की तरफ से वो भी क्लियर हम रूट एक एक करके करा रहे हैं। दूसरा सूचना जो है मझवाड़ में, जो मंडी से करीबन 11 किलोमीटर ये हमारी बल सब डिवीज़न में पड़ता है, यहाँ भी जो है कुछ मिस हैपनिंग्स की हमारे पास सूचना पहुँची है, तो वहाँ पर हमारी जो है SDRF की टीम डिप्लॉयड है और NDRF की टीम हमारी 3 मल्टीपल पॉइंट्स पे हमने डिप्लॉय सुबह ही कर दी थी। A key stretch of the Shimla-Kalka National Highway connecting Shimla and Chandigarh has been affected by reoccurring landslides over the past 2 weeks. Incessant showers in Himachal Pradesh in the past 24 hours triggered landslides, blocking several roads including the key Shimla-Chandigarh road, which was closed for buses and trucks. The Weather Office has issued a yellow warning of heavy rainfall, thunderstorm and lightning at isolated places from August 14th to 17th and predicted a wet spell in the state till August 19th.